Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is first episode of Weekly Mastermind in this September month जहाँ पे हम लोग ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करेंगे एंड बाय मिस्टेक मैंने जो हमारा टेक्निकल वेडनेसडेज था उसमें बताया था दैट फ्राइडे को मार्केट क्लोज रहेगा बट मार्केट फॉर्चुनेटली ओपन था बिकॉज ऑफ विच वी सॉ वेरी डिसेंट मूव इन द ओवरऑल मार्केट एज वेल। तो उसी को हम लोग ओवरऑल एनालिसिस करेंगे यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच दैट इज मंथली वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम where monthly depicts long term trend, weekly depicts medium term trend and daily depicts short term trend from swing trading perspective। और हम लोग प्राइस एक्शन बॉलिंजर बैंड्स और आरएसआई का यूसेज करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द सेक्टर्स व्हिच आर आउट परफॉर्मिंग, कौन से सेक्टर्स ऑन द वर्ज ऑफ आउट परफॉर्मिंग है और कौन से सेक्टर्स अंडर परफॉर्मिंग है जिसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसका हम लोग टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस एपिसोड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। इफ पॉसिबल आप प्रॉपर नोट्स भी ले सकते हो दैट यस दीज आर द सेक्टर्स व्हिच आर आउट परफॉर्मिंग, दीज आर एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग आउट ऑफ 60 और ब्रेकिंग डाउन ऑफ 40, जिसमें हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हैं या शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं एंड सो ऑन। सो दैट विच एवर सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग गुड आप उसमें लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हो, विच एवर सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग द वीकेस्ट आप उसमें शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हो एंड सो ऑन। Right, so let's quickly have a look at weekly mastermind for this week. Right, so yeah, so once again welcome to weekly mastermind for 7th of September 2025 जहाँ पे हमारा एजेंडा रहेगा। पहले हम मार्केट इंडेक्स देखेंगे, देन वील हैव अ लुक एट आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स। तो मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी अप बाय 1.28, सेंसेक्स अप बाय 1.12, बैंक निफ्टी अप बाय 0.85, मिड कैप अप बाय 2.39, इंडिया विक्स डाउन बाय 8.25 which is actually good and USD INR पॉजिटिव में है up by 0.02 which is not good for the overall rupee to dollar conversion वाला thing, but let's see again that depends on geopolitical scenarios and politics में क्या चल रहा है and so on, it doesn't depend on technicals या फिर any other thing, so we don't need to go deeper into that aspect। अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखा जाए तो मंथली में अभी 60 सपोर्ट लेके बुलिश कैंडल बना रहा है, वीकली में कंसोलिडेशन, डेली में भी कंसोलिडेशन एंड डेली में जो है यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड पैटर्न है, प्लस यहाँ पे आरएसआई का भी डाइवर्जेंस था विच वाज अ वेरी गुड पार्ट। बट अगेन द नेक्स्ट थिंग टू वॉच आउट फॉर इज क्या वो यहाँ से हायर टॉप बनाता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टॉप। इफ यस तो यहाँ से हमें अप ट्रेंड की रैली देखने को मिल सकती है, अदरवाइज इट कैन गो इनटू अ कंसोलिडेशन जोन इटसेल्फ फॉर्मिंग सिमिलर टॉप्स एंड सिमिलर बॉटम्स। देन वी हैव बैंक निफ्टी मंथली अगेन अराउंड 60, यहाँ पे छोटी सी बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, वीकली में 40-60 के बीच में है एंड यहाँ पे देखा जाए तो चेंज इन पोलैरिटी वाला जोन है वेयर द प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नाउ एक्टिंग एज अ सपोर्ट which could be a very strong support as well if confirmed properly। and यहाँ पे डेली में again it is sustaining below 40 itself forming lower tops and lower bottoms, taking moving average resistance which is not good for the banking sector of any of the country or any of the market। सो लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू टेक 40 रेजिस्टेंस या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, बिकॉज अगर वो ब्रेकआउट कर देता है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन यहाँ से और हमें थोड़ा सा कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है और एटलीस्ट इट कैन गो इनटू अ कंसोलिडेशन फॉर द टाइम बीइंग। देन वी हैव प्राइवेट बैंक्स मंथली अगेन 57 के आसपास है, वीकली ऑलमोस्ट 40 का सपोर्ट लेके सीआईपी भी है, प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड डेली में भी सिमिलर कंडीशन है एज ऑफ बैंक निफ्टी जहाँ पे ऑलमोस्ट 39-40 के आसपास है। अगर वो रेजिस्टेंस ले लेता है विच मीन्स इट विल मेंशन आई एम वेरी बेरिश विच विल नॉट बी गुड फॉर द बैंकिंग सेक्टर। अगर वो ब्रेकआउट कर देता है 40 का देन फॉर द टाइम बीइंग इट कैन गो इनटू अ कंसोलिडेशन जोन। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। देन वी हैव पीएसयू बैंक्स मंथली अराउंड 59-60, वीकली कंसोलिडेशन में है, डेली भी कंसोलिडेशन में है। सो टिल द पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट ब्रेकिंग आउट ऑफ प्रीवियस हाइज एंड इट इज नॉट ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रीवियस लोज, तब तक वो कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा। देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक, आईटी सेक्टर को छोड़ के सारे सेक्टर्स वर ऑन द पॉजिटिव साइड, जिसमें से मेटल वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर अप बाय 5.75, फॉलोड बाय ऑटो 5.44 एंड देन वी हैव एनर्जी अप बाय 1.95 एंड सो ऑन। तो सेक्टर स्पेसिफिक के इंडेक्स देखें तो लाइक सेक्टर स्पेसिफिक के चार्ट्स देखें तो मंथली साइडवेज है आईटी सेक्टर का, वीकली अराउंड 39 एंड डेली भी अराउंड 39। लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू टेक आरएसआई 40 सपोर्ट और नॉट, बिकॉज अगर यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाता है तो मीडियम टर्म ट्रेंड जो है दैट इज वीकली चार्ट वो भी थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड में चला जाएगा विच विल नॉट बी गुड फॉर द ओवरऑल आईटी सेक्टर। बट अगेन जैसे कि मैंने काफी बार बताया है दैट आईटी सेक्टर एंड द ओवरऑल मार्केट दे आर इनवर्स इन रिलेशन। अगर आईटी सेक्टर ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आता है, अगर आईटी सेक्टर नीचे जाता है तो मार्केट ऊपर रहता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स।
सो राइट नाउ लाइक दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस, बट देखा जाए तो वीकली चार्ट में अगर वो RSI 40 के नीचे चला जाता है तो ट्रेंड काफी ज्यादा बेरिश हो जाएगा ऑन द IT सेक्टर फ्रॉम लाइक डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट पर्सपेक्टिव. देन वी हैव ऑटो मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली भी अबाउट 60. बहुत ज्यादा टाइट स्क्वीज पहले बना था 3 हफ्ते पहले तक, एंड आई हैव मेंशन्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स. टाइटर द स्क्वीज स्ट्रॉन्गर द मूव, ईदर ऑन द अपर साइड और ऑन द लोअर साइड. एंड यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमें अपर साइड में मूवमेंट देखने को मिली, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. एंड अगेन यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज बना रहा है. सो ऑटो सेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स राइट नाउ, जिसमें हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हैं. देन वी हैव मेटल मंथली ब्रेकआउट के आसपास है, वीकली इज ऑल्सो अराउंड ब्रेकआउट, एंड डेली में भी 60-61 के आसपास है. सो दिस इज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर राइट नाउ. अगर वो ब्रेकआउट कर देता है प्रॉपर बुलिश कैंडल्स के साथ तो वेल एंड गुड. अदरवाइज थोड़ा सा भी यहाँ से वहां हुआ, छोटे से भी बेरिश कैंडल्स को कंफर्मेशन मिल गया तो वहां से थोड़ी देर के लिए और कंसोलिडेशन में जा सकता है. एंड एज यू कैन सी सिंस लास्ट ऑलमोस्ट like 11 months, metal sector is already in a consolidation zone itself, as you can see on weekly chart. तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगेगा फ्रॉम द बुल साइड in order to break out properly and in order to sustain that particular breakout. Then we have FMCG monthly, weekly, daily, all three time frames 40-60 के बीच में फिलहाल we can avoid this until it is not breaking out or breaking down. Then we have energy monthly, weekly, both are in sideways. Weekly में proper 40 support लिया है, which means it is mentioning I am not so bearish, and daily में भी 40 के नीचे sustain करने के बाद now it is almost around 43. And let's see अगर वो 40 support ले लेता है, which means this will be like a proper bullish range shift where from sustaining below 40 to now taking 40 support. That's what proper bullish range shift is all about. And अगर आपको नहीं पता है what that is all about, you can check out both of our series, that is RSI Mastery series and Basics of Technical Analysis. दोनों में ही मैंने in depth समझा रखा है. Then we have Pharma monthly around 60, proper support ले रहा है, but again this will get confirmed 1 or 2 weeks down the line. अगर यहाँ पे हमें bullish movement देखने को मिलती है, अगर नहीं देखने को मिलती है तो again it will consolidate around RSI 60 या फिर वो 40-60 के बीच में भी आ सकता है for the time being. Then we have weekly and daily, both are in a consolidation zone, so this could be the sector which we can track for proper breakouts. अगर breakout हो जाते हैं तो pharma भी काफी अच्छा trend पकड़ सकता है, similar as of auto sector. Then we have infra monthly again 60 support ले रहा है, and moving average का भी support ले रहा है, which is actually very good, which means it is mentioning I'm very bullish. Weekly and daily are in a consolidation zone, so this is the time to watch out for this sector as well. अगर वो breakout कर देता है और 60 के ऊपर तो well and good from bulls perspective. अगर वो breakdown कर देता है तो for the time being वो bearish भी हो सकता है. Then we have reality, all three time frames actually monthly and weekly are in a consolidation, and daily में वो breakdown कर रहा है. So let's see whether it is going to continue further with this breakdown या फिर वो for the time being consolidation में चला जाएगा, similar to weekly and monthly chart. Then we have media, all three time frames 40-60 के बीच में we can avoid this particular sector, right? So that's the overall analysis, and I hope that आपको अच्छे से समझ में आया होगा that what are the sectors which are outperforming right now. Auto is the only one which is performing really very well from long perspective. IT is the one which is performing well from short perspective. उसके अलावा जो भी sectors है किसी का monthly outperform कर रहा है तो weekly and daily are in a consolidation zone, and we have to wait for proper breakouts on those sectors. So you can check those sectors, and जो भी sectors outperform कर रहे हैं like auto from long perspective, IT from short perspective, आप उन सेक्टर्स के स्टॉक स्पेसिफिक में जाके अच्छे से टॉप डाउन अप्रोच करो दैट व्हाट आर द स्टॉक्स व्हिच आर परफॉर्मिंग गुड, जिसमें आप इंडिविजुअल स्टॉक्स वाइज ट्रेड कर सकते हो whether in equity या फिर futures and options. Although futures and options is not my recommendation initially, if you are not profitable in the market since last couple of years and your systems are not at its place, your risk management is not at its place, so I would not recommend anyone to opt in for futures and options. इक्विटी में ही ट्रेड कर सकते हो, बट द ड्रॉबैक ऑफ इक्विटी इज दैट आप उसमें शॉर्ट ट्रेड्स नहीं ले सकते हो. टू ट्रेड ऑन द शॉर्टर साइड यू हैव टू ट्रेड ईदर इन फ्यूचर्स या फिर आपको ऑप्शंस पुट बाय करने होते हैं एंड सो ऑन. सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस. मेक श्योर आप फिलहाल के लिए लॉन्ग साइड में ट्रेड्स लो, बिकॉज ऑटो इज वन ऑफ द सेक्टर्स विच इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी गुड, एंड काफी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, विच मीन्स दिस मूव इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज जैसे मैंने काफी बार बताया है, the longer and tighter the squeeze, stronger the move either on the upside or on the downside, and यहाँ पे हमें upside देखने को मिली है, which is actually very good.
So make sure you do the analysis, and whatever takeaways you had from this epic episode, do share below in the comment section, and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.